All right, good. Assalamu alaikum, everyone. Let's begin. So we are starting this year's past paper session right now. I'll be trying to cover all the 2022 papers, and then depending on the time, we'll go backwards and do any remaining papers that we have from 2020 and 2021. You can see in the link below in the description. I did this session last year as well, and we were able to do most of the 2021 papers last year. So if there are any remaining from 2020 or 2021, after I'm done with the 2022 papers, I will go back and do those 21 papers or 2020 and 2021 papers as well. You'll also find in the description below recordings for my recent crash courses for all four papers, paper one, paper three, M1, S1 that I teach. And if you find any of the methods I'm using different from what you've done, if you want to have a look at how that works, you can have a look at those recordings in the description as well. Okay, now let's start with this. We are short in time before the iftar, so we'll try to be a bit quick and make sure that we are able to complete this paper. This is paper 3, May-June 2022. There's also one thing that I would want to let you know. So if you look at the description, there is a playlist by the name of Yearly Past Papers. Please make sure that you have a look at the first video in that playlist. जिसमें मैंने सारे details बताई हुई हैं कि आपके instructions क्या क्या होती हैं हर paper के अंदर, how you need to write your answers to 3 significant figures or more, or 1 decimal place or more for angles and degrees. And there are some other tips and guidelines that you would want to have a look at while you're doing these papers. Now, let's start with this. So this is May-June 2022 paper 3, variant 1. So what I generally do is I look at the thresholds that they have in a particular session. For example, in this case, there were three variants of paper 3, 3.1, 3.2, 3.3. इन तीनों में से जिसका भी सबसे कम threshold था, इसका मतलब है कि that was a relatively more difficult paper. I will be doing that paper complete in this session. और फिर जो बाकी दोनों papers हैं, उनके हम सिर्फ जो ज़्यादा मुश्किल वाले questions हैं, वो discuss करेंगे in another session. Okay, so for every session, I will be I'll be doing one complete paper, and for the other two variants, I will be just choosing some specific questions which are relatively more difficult, और हम वो discuss कर रहे होंगे in sessions के अंदर. ठीक है, so I'm starting with paper 3 first. May-June 2022 का paper 1 already I've done that, so I'm not going to do that again. You can find that in the recordings. Now let's start with this. May-June 2022 paper 3 variant 1. Let's start with the first question. So this is logarithms. You have 2 into 3 raised to power 2x minus 1 equals 4 raised to power x plus 1. We need to find the value of x from this, giving an answer correct to 2 decimal places. Now, how do you start with this? यहाँ पे देखें terms के दरम्यान में कोई भी plus minus नहीं आ रहा. There is a single term on both sides, one term on the left side, one term on the right side. What we can do is we can just do it directly. आप डायरेक्टली इसमें log ले सकते हैं दोनों sides के ऊपर, so that it becomes ln of 2 into 3 raised to power 2x minus 1 on the left side. On the right side, you have ln of 4 raised to power x plus 1. Now, after you've taken log on both sides, now you can't use the power law yet on the left side because 2 multiplied by 3 raised to power 2x minus 1 है, जो power 2x minus 1 है वो सिर्फ 3 के ऊपर है. अभी आप 2x minus 1 को नीचे नहीं लेकर आ सकते. What you have to do is you have to first apply multiplication law to break this down. This is multiplication inside ln. इसको जब expand करेंगे ये क्या बन जाएगा? ये addition outside ln हो जाएगा. It becomes ln of 2 plus ln of 3 raised to power 2x minus 1. That equals ln of 4 raised to power x plus 1. Okay, now we can apply power law on this and on this, so that it becomes ln of 2 plus 2x minus 1 whole multiplied by ln 3. Make sure that you're using brackets here. 2x minus 1 पूरा multiply हो रहा है ln 3 के साथ. On the other side, x plus 1 is in the power, x plus 1 नीचे आ जाएगा, and it will become x plus 1 into ln of 4 like this. Okay,
I think it's my pen size is a bit small. Let me just check the settings here very quickly. Now just give me 10 seconds. It's very thin right now. Okay, I think this is better. All right, so this is what we get. Now, let's simplify this and see what we get from this. ln of 2 plus 2x into ln 3 minus ln 3. On the other side, we have x into ln 4 plus ln 4. Now what we do is, since we're looking for the value of x, हम सारी जो x terms हैं उनको एक side पर ले जाएंगे, ठीक है? X terms को एक side पे ले जाएं. So 2x ln 3 is what we have on the left side. Right side से x ln 4 को यहाँ पे ले आएं and take all the terms that do not have ln in them to the other side. So on the other side, we are going to have ln of 4 minus ln of 2 plus ln 3. I would recommend you don't convert it to decimals at this point. Do it at the end ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो. अगर आप पहले से राउंड ऑफ कर लेंगे तो उससे अक्सर आपके आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रहे होते. Okay, now we can take x common on the left side, and that leaves us with 2 ln 3 minus ln 4 on the left side. On the right side, you have ln 4 minus ln 2 plus ln 3. And then you can put this whole thing on your calculator. You have x equal to ln of 4 minus ln 2 plus ln 3 divided by 2 ln 3 minus ln of 4. Put this whole thing on your calculator and see what you get from that. Let me do that. So use the fraction button and then you write ln 4 minus ln of 2. You could also use multiplication or division law here to simplify things before you put this in your calculator, but that's optional here because आपको answer अपना decimals में चाहिए in any case. Minus ln of 4. This is giving me 2.2095. 2.2095, but you see, in the question it says you have to give your answer to 2 decimal places. जब question की statement के अंदर पे instruction होती है, you have to make sure that you follow that, otherwise आपके marks कट जाते हैं. ठीक है, इसमें उसने 2 decimal places लिखा हुआ है, you have to write 2 decimal places, so this would become 2.21. All right, so that's the value of x that we get from this first question. All right, let's move on. So you can write your questions in the chat box as well if you have any at any point. So I'll have a look at those questions. I do have those questions in the chat box in front as well. So if I think a question is relevant and I can answer that right away, I'll do that. Sat. Otherwise, I'll keep moving on. Okay, so this is the next part. Next question, in fact. Expand 2 minus x squared whole raised to power minus 2 in ascending powers of x up to and including the term in x raised to power 4, simplifying the coefficients. This is paper 3. Paper 3 वाला binomial formula आपके पास क्या होता है? You see, power में भी negative number आ रहा है, तो इसमें आपको यही formula use करना पड़ेगा. So you have the formula sheet. You should keep the formula sheet in front of you for problems like these. This is what you have in the formula sheet. Formula sheet में paper 3 के लिए you have this formula. I'm just going to copy it there. So when you're doing these questions, you should have this page in front of you. Okay, so this is what it says in the formula sheet. ये आपके पास formula 1 plus x whole raised to power n इसकी expansion ऐसे होती है, ठीक है? Now, you see, the condition that we have for using this formula is that the first term has to be 1. In the expansion that we're given, in the expression that we're given, the first term is not 1, तो आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा पहले. अब इसको कैसे 1 बनाएंगे? It's 2 minus x whole raised to power x squared whole raised to power minus 2 like this. आप क्या करेंगे? इस 2 को बाहर कॉमन ले जाएंगे. लेकिन कॉमन लेने के लिए
remember -2 जो है वो भी उसकी power में आ रहा होगा. So when you take 2 common outside, it's going to be 2 raised to power -2. And then inside the brackets, you're going to be left with 1 minus x squared over 2 whole raised to power -2. Okay, now outside you have 2 raised to power -2, that becomes 1 over 2 squared. And on this expression, now you can apply this formula. You have to think about what do you have in place of x here. X की जगह पे आपके पास आपके expression में क्या आ रहा है? x minus x square over 2. So जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे भी आपके पास x आ रहा है फॉर्मूला के अंदर, आपने उसको रिप्लेस कर देना है minus x squared over 2 के साथ. Okay, let's do that and apply the formula. You have 1 plus n times x, 1 plus n times x. What's n? N is -2. So 1 plus -2 into x. देखें x की जगह पे आपको क्या इनपुट करना है? minus x squared over 2 plus, now we're looking at this third term, n into n minus 1. That's -2 into -2 minus 1. What is that going to be? -3 divided by 2 factorial, which is just 2, into x squared. Remember, x की जगह पे आपको इनपुट करना है minus x square over 2 और उसका पूरे का स्क्वायर लेना है. ठीक है? Now, what does it say in the question? You have to expand it up to and including the term in x square, x raised to power 4, sorry. आपके पास वो ऑलरेडी टर्म आ चुकी है. x squared का स्क्वायर जो होगा वो x raised to power 4 होगा. You don't have to expand any further than this. You just stop at this point और इसको simplify कर लेंगे. ठीक है? Now outside we have 1 over 4. Inside, you simplify this now. You have a negative sign here, a negative sign here. It becomes positive. 2 and 2 get cancelled, and we're left with 1 plus x squared here. And then the next term, you can put this whole thing on your calculator. Remember how we have done this in class. So you can just replace x with 1 and put this whole thing in your calculator, right? x की जगह पे 1 डाल दें और इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में इनपुट कर दें. ये देखें आपके पास क्या आता है, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा because of no, minus sign नहीं रहेगा. You have -2 into -3, that's going to become positive, so you have a positive sign here. 2 and 2 are going to get cancelled, and you're going to have 3 over 4 x raised to power 4 from this. And now you simplify this, so you're not going to leave it in this form. आपने इसको बाहर जो 1 over 4 है इसको अंदर multiply करना है, and that is going to give you 1 over 4 plus 1 over 4 x squared plus 3 over 16 x raised to power 4. And that is the expansion that we're looking for. ये आपने expand कर लिया x raised to power 4 तक इस expression को. Okay, let's move on. That was question number 2, part A. Part B, it says state the set of values of x for which the expansion is valid. All right, now remember you have a condition here in this formula, and that condition is modulus of x has to be less than 1. Modulus of x has to be less than 1. अब यहाँ पे आप देखें x की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है? फॉर्मूला में जो x होता है, फॉर्मूला में x जो होता है उसकी जगह पे आपके पास क्या आ रहा है? minus x square over 2. So if you had 1 plus x whole raised to power n, if you had this thing, इसके लिए condition क्या होती है? Modulus of x should be less than 1. इसके लिए ये condition होती है. Or you can also write this as x is between -1 and +1. इस एक्सप्रेशन के लिए तो ये कंडीशन होती है, लेकिन आपने जो यहाँ पे एक्सपैंड किया है, आपने क्या एक्सपैंड किया? आपने एक्सपैंड किया है 1 minus x square over 2. ऑलराइट, इसका मतलब ये है x की जगह पे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास minus x square over 2. अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है 1 minus x square over 2 whole raised to power something, इसमें क्या होगा? x की जगह पे जो भी आ रहा है that should be between -1 and 1. All right, you can either say modulus of minus x square over 2 is less than 1. What is that going to give you?
मॉडुलस की वजह से ये माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा, 2 will go to the other side and you'll get modulus of x square less than 2, and you could write it as modulus of x should be less than square root of 2. That's one way of doing this, or you could use this expanded form. That's what we are more used to. अगर आप वो यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर x -1 और 1 के दरमियान में है तो इधर x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, दैट शुड बी बिटवीन -1 and 1. इसको आपने अब सॉल्व कर लेना है. दिस कुड बी चेंज्ड टू x स्क्वायर ओवर 2 between -1 and 1. अगर यहाँ पे माइनस आप खत्म भी कर दें, इनइक्वालिटी एक तरह से इंटरचेंज हो जाएगी एंड यू गेट टू थिंग्स फ्रॉम हियर, x स्क्वायर ओवर 2, या इसको डायरेक्टली भी कर लें तो if this is going to confuse you, -1 is less than minus x square over 2, or minus x square over 2 is less than 1. इसको दो पार्ट्स में आपने ब्रेक कर लिया. अब लेफ्ट वाली साइड से आपके पास क्या आ रहा है, यू हैव नेगेटिव साइंस ऑन बोथ साइड्स. आप पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें. व्हेन यू डू दैट, the inequality sign is going to change and you get 1 greater than x square over 2, and that gives you 2 greater than x square. इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x should be between minus square root of 2 and square root of 2. ओके, अगर x square जो है वो 2 से कम है, अगर x square 2 से कम है, if x square is less than 2, then x should be between minus square root of 2 and plus square root of 2. दूसरे से आप देखते हैं क्या आता है, x square over 2 should be greater than -1 when you multiply this inequality by -1. That leaves us with x square greater than -2. Now this is always true, तो यहाँ से आपको कोई condition नहीं मिलती है. The only condition that you're getting for x is from this other inequality. क्योंकि दूसरे में देखें x square तो हमेशा -2 से बड़ा ही होता है, उससे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी उससे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 is less than x, which is less than square root of 2. Okay, you could leave this like this. This is one possible way of writing this, or you could leave it like this. This is also correct. आप मॉडुलस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं. पहले वो नहीं, पिछली पुरानी वाली मार्किंग स्कीम्स में वो नहीं अलाउ करता होता था, बट रीसेंट मार्किंग स्कीम्स में आप देखेंगे उसने मॉडुलस वाला भी अलाउ किया. अगर आप मॉडुलस फॉर्म में भी छोड़ देते हैं, that is acceptable. However, you have to make this in terms of x at the end, कि एक साइड पे सिर्फ x होना चाहिए. आप इस तरह नहीं छोड़ सकते कि आप सिर्फ ये लिख कर आ जाएं minus x square over 2 का मॉडुलस is less than 1. That is not acceptable. Okay, so आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट छोड़ सकते हैं. All right, let's move on. Question number 3 from this paper. It says solve this equation 2 cot 2x plus 3 cot x equals 5 for x between 0 degrees and 180 degrees. We need to solve this trigonometric equation. अब इसको कैसे solve करें? We have a double angle and we have cot. Remember, trigonometric equations को solve करते हुए हमें क्या करना होता है? We want only one type of function and only one type of angle. Function सिर्फ एक टाइप का होना चाहिए, और वो भी किन में से, sin cos tan में से, because calculator पे cot का बटन तो होता ही नहीं है, तो हमें किसी तरह से sin cos tan में कन्वर्ट करना है इन तीनों में से किसी एक फॉर्म के अंदर. That's one thing. And the other thing is, ये जो एंगल्स यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, एक 2x आ रहा है और एक x आ रहा है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. हमें या तो दोनों x चाहिए या दोनों 2x चाहिए. ठीक है, या तो दोनों एंगल्स को सेम कर, एक तो दोनों एंगल्स को सेम करना है और दूसरा आपने sin cos से tan में कन्वर्ट करना है. Now let's see how we can do that. We could either convert it to cos over sin, that's one idea, or we could write it as 1 over tan. दोनों यूज कर सकते हैं. A lot of times converting this thing to cos over sin is easier जब हम identities prove कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम cos over sin में करेंगे तो उसमें फिर हमें end पे जाके दोबारा से किसी तरह से एक function में convert करना पड़ेगा, because हमारे पास cos भी आ रहा होगा और sin भी आ रहा होगा, तो that might be slightly more complicated. तो हम क्या करते हैं, इसको tan में convert कर लेते हैं ताकि सिर्फ function एक ही आ रहा हो और फिर हम उसको solve कर सकें. tan में convert करेंगे तो क्या होएगा, cot 2x
this can be written as 1 over tan 2x, so it becomes, the first term becomes 2 over tan 2x plus 3 over tan x equals 5. And now we need to somehow convert tan 2x to a single angle. इसके लिए हमारे पास identities होती है. You should again keep the formula sheet in front. Tan की double angle identity is given here. This is the double angle identity for tan. ये आप apply करके उसको single angle में convert कर सकते हैं. ठीक है? Let me do that here. Let me write the identity on the side here. This is how it's given in the formula sheet. Tan of 2a is identical to 2 tan a divided by 1 minus tan squared a. अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 2x आ रहा है, tan 2x आ रहा है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें. So it becomes 1 over tan 2a. What would that give you? अगर आप लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे. ऑफ कोर्स राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1 minus tan squared a divided by 2 tan a. ये आप जाके यहाँ पे इनपुट कर दें. Okay, you can think of it like this कि 2 एक तरह से आपने बाहर रखा हुआ है, अंदर आपके पास है 1 over tan 2x. 1 over tan 2x की जगह पे आप ये पूरा एक्सप्रेशन डाल दें, वो a की टर्म्स में, यहाँ पे बस x की टर्म्स में कर दें. And this is going to become 1 minus tan squared x divided by 2 tan x plus 3 over tan x equals 5. Okay. Now 2 and 2 they get cancelled. Tan x से अगर आप multiply कर दें पूरी equation को तो fraction खत्म हो जाएगी. Let's do that. Tan x LCM left side पे आप पूरी equation को tan x से multiply कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 1 minus tan square x plus 3. On the other side you would have 5 tan x. Right? First term tan से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में tan कैंसिल हो जाएगा. सेकंड टर्म tan से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में tan से कैंसिल हो जाएगा. और राइट साइड पे आपके पास tan x यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Okay, now let's simplify this. Let's take everything to the left side. We get minus tan squared x minus 5 tan x, and we have 1 plus 3 here. That becomes plus 4 equals 0. Let's multiply the whole equation by minus 1. And that gives us tan square x plus 5 tan x minus 4 equals 0. So this is a quadratic equation that we're getting in terms of tan now. ये हमें solve करनी है इस interval के लिए 0 से लेकर 180. क्या कर सकते हैं? इसको हम इसमें substitution use कर सकते हैं. We could say let t equals tan x, or कोई भी letter use कर ले, it doesn't really make any difference. This would give you u squared plus 5u minus 4 equals 0. Can we factorize this? We can. It becomes u squared, or can we minus करके आपके पास आना चाहिए? I think we can't actually factorize this. 5 minus 1. Yeah, we can't factorize this. Factorization नहीं कर सकेंगे तो हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. -5 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए प्लीज रिमेंबर ये एक स्टेप जरूर आप शो कर दिया करें. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करके दिखा दें. -b plus minus square root of b squared, which is 5 squared, minus 4 into 1 into minus 4 whole divided by 2 into 1. इसके बाद आप directly answers इसके लिख सकते हैं, and that is acceptable. Okay, now let me do this. ये स्टेप लिखने के बाद आप बेशक कैलकुलेटर में इक्वेशन वाला बटन भी यूज कर लें, that's also all right. Okay, so this is u squared plus 5u minus 4. Okay, I'm getting u equal to 0.70156. So I can say it's 7016, and the other value is minus 5.70156. You can say 7016.
ओके, यहाँ पे आपने अपनी एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है, अदरवाइज आपके फाइनल आंसर सही नहीं आ रहे होंगे। अब आप क्या करें, वो सब्स्टिट्यूशन वापस इनपुट कर दें। You get tan x equal to 0.7016 or tan x equals minus 5.7016. Find the basic angle. Tan alpha equals 0.7016. Let's see what the basic angle that we get from this. Your calculator should be in degrees. Make sure that you are using the correct mode in your calculator. Tan inverse of 0.7016, that is giving me 35.1 degrees. Okay. Let's find the basic angle from this one as well. 5.7016. Let's see what the basic angle here turns out to be. Tan inverse of 5.7016. This is giving me 80.05 degrees. These are the basic angles that I'm getting from both of these cases. अब quadrants में देख लेते हैं आपके पास कौन से angles बन सकते हैं. Tan first case में positive है. Positive tan किधर होता है? It's either the first quadrant or the third quadrant. But remember what the interval is. The interval that we're given is from 0 to 180. Interval is from 0 to 180. So ये third quadrant तो possible नहीं होएगा. We only have the first quadrant here. So the value that we get from the first case is x equals 35.1 degrees. This is one answer that we get. Let's look at the other case now. Second case में देखें tan negative है. Tan negative कहाँ पर होता है? It's the second quadrant or the fourth quadrant. Again, the fourth quadrant is outside the interval, so we can't use that. Second quadrant में we could have the basic angle here. Second quadrant में आपका angle पर क्या आ जाएगा? 180 minus 80.05 degrees, and that is going to give me 99.9 degrees. This is the value. This is the other value of x that we're getting. These are the two solutions that we get for this equation. X equals 35.1 or x equals 99.1. Okay, let's move on. That was question number 3 from the work, this paper. Now the next one is on differential equations. The variables x and y satisfy this differential equation. Dy over dx equals xy over 1 plus x squared, and y equals 2 when x equals 0. We need to solve this differential equation, obtaining a simplified expression for y in terms of x. Differential equation solve करनी है, y in terms of x figure out करना है. Remember, how do we solve differential equation? What's the first thing that we do? We separate the variables. Let's write that differential equation down here and separate the variables. dy left side पे numerator में, आपको left side पे y वाली terms चाहिए सारी, right? और dx right पे चला जाएगा, right side पे सारी x terms होनी चाहिए. y में y आपके पास सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, इसको आप left side पे जाके लिख दें. It becomes 1 over y dy. On the right side, you would have x over 1 plus x squared. Take dx to the other side, we have dx here. You have separated the variables. एक mark आपको सिर्फ इसमें मिल जाएगा variable separate करने का, ठीक है? Now you integrate both sides. Integrate the left hand side and the right hand side. Now that you've separated the variables, left side integrate hogi with respect to y, or right side integrate hogi with respect to x. Okay, 1 over y का integral क्या होगा with respect to y? It's going to be ln of y. On the right side, we have x over 1 plus x squared. Okay, so now we need to think about what method we could use here. Fraction है, fraction को integrate करने के लिए आपके पास कौन-कौन से methods होते हैं? Log rule हो सकता है, tan inverse, partial fractions, numerators को आप separate कर सकते हैं, improper fractions वाला, polynomials वाला method use कर सकते हैं. There are a number of methods that you have there. So which rule can we apply here? Remember what we discussed. आपको कहाँ से start करना चाहिए? तो अच्छा तो आप देख के वैसे figure out कर लेंगे, spot कर लेंगे. अगर नहीं आपसे हो रहा तो you just go one by one and think. Start from the log rule. क्या वो apply हो सकता है? Now, if we start from the log rule here, what's the derivative of the denominator? The derivative of the denominator is 2x.
क्या हम न्यूमरेटर में 2x लेकर आ सकते हैं किसी तरह से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके? वी हैव x here in the numerator, हम 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में हमारे पास 2x आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में इंटीग्रल के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में x 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या होएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। बट वी कांट जस्ट मल्टीप्लाई एन एक्सप्रेशन विद समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, वो तो चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो उसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। रिमेंबर वी कैन ओनली डू दिस इफ यू आर डूइंग दिस यूजिंग अ कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, x को नहीं कर सकते। ओके ये आपने कर लिया। अब अंदर वाली एक्सप्रेशन देखें, एग्जैक्टली लॉग वाली फॉर्म बन गई आपके पास। रिमेंबर व्हाट वाज द लॉग फॉर्म, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा हो तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इट्स जस्ट द लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये वो वाली फॉर्म बन गई आपके पास, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 outside remains as it is, and you have ln of 1 plus x squared. This is the integration for this thing on the right side. ये आपने इंटीग्रेट कर लिया। Now you have to have a plus c there as well. Do not forget plus c. Plus c आप सिर्फ तब इग्नोर कर सकते हैं जब आपके पास लिमिट्स हो, अदरवाइज आपने हमेशा c डालना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस c की वैल्यू फिगर आउट करेंगे। इस c की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए उसने एक पॉइंट दिया हुआ है हमें, उसने कहा है कि y equals 2 when x equals 0। ये इनपुट कर दें यहाँ पे, put x equals 0 and y equals 2 and see what we get from this. ln of 2 equals 1/2 into ln of 1 plus 0 squared plus c। ln 1 तो 0 होता है, तो राइट साइड पे तो आपके पास 0 आ जाएगा, इस टर्म ये टर्म 0 हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास ln 2 है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ln 2 आ गई। So now this equation becomes ln y equals 1/2 into ln of 1 plus x squared plus ln of 2। आपने c eliminate कर लिया। Now you have an equation in terms of y and x। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके जनरली जब आप इस पॉइंट तक कर लेते हैं, आपको जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं उनमें से 1 लेस आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो इफ इट्स 7 मार्क्स यू गेट 6 मार्क्स अंटिल दिस पॉइंट। अगर आपने यहाँ तक सही कर लिया आपको 6 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट मार्क इज गोइंग टू बी फॉर कन्वर्टिंग इट टू द रिक्वायर्ड फॉर्म। उसने क्या कहा है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो y को आपने सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे देखें हर टर्म के अंदर लॉग आ रहे हैं, आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन लॉ। राइट साइड के ऊपर मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस फर्स्ट एलन के बाहर 1/2 आ रहा है। जब 1/2 आपके पास आ रहा होता है तो उसमें जब एलन के बाहर आपके पास 1 के अलावा कुछ आ रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, आपके पास एलन के बाहर 1 चाहिए होता है आपको। तो 1/2 के साथ हम ये कर सकते हैं कि इसको हम पावर में लेके जा सकते हैं, इसको हम यहाँ पे पावर में लेके जा सकते हैं। What is that going to give us? ln y equals ln of 1 plus x squared whole raised to power 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं राइट साइड के ऊपर। दिस इज एडिशन आउटसाइड लॉग, inside log it's going to become multiplication, so it becomes ln of 1 plus x squared multiplied by 2। okay ये sorry whole raised to power 1/2 भी है, 1/x square 1 plus x square whole raised to power 1/2 multiplied by 2। ये आपके पास आ गया इसके अंदर। on the left side you have ln of y। Once you have a single log term on both sides, left side पे भी सिर्फ एक ln है, right side पे भी सिर्फ एक ln है। अब आप इस ln को रिमूव कर सकते हो and you could say y equals 2 into 1 plus x squared whole raised to power 1/2। That is what we get for y in terms of x। Alright, ये आपको फिगर आउट करना था। आपको इस पॉइंट तक 6 मार्क्स तो ऑलरेडी मिल गए होंगे।
1 मार्क पर इस कन्वर्जन का आएगा। जब आप एग्जाम में कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा उस फॉर्म में कैसे करना है, आई वुड रिकमेंड ये लास्ट पार्ट जो है ना, इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। अगर आपका बाकी पेपर बहुत रहता है तो ये 1 मार्क आप उस पॉइंट के लिए बेशक स्किप कर दें, इस पे वापस आ जाएं एंड पे इफ यू हैव इनफ टाइम। अदरवाइज अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, तो सिर्फ 1 मार्क का पार्ट होता है, उसकी वजह से उनका कि मेजर क्वेश्चन बाद में या मेजर पार्ट रह जाता है। सो अगर आपसे आपको ये फॉरन नहीं फिगर आउट हो रहा आपसे, क्योंकि कुछ काफी लोगों को लॉग्स जो है फॉर सम रीजन कंफ्यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आगे वाले पार्ट को स्किप कर दें, बिकॉज इस पॉइंट से आगे वाले पार्ट को बेशक स्किप कर दें उस पॉइंट के लिए एग्जाम में, बाकी पेपर कर लें, उस पर एंड पे वापस आ जाए, तो इसका सिर्फ 1 मार्क होगा एंड पे। All right, let's move on. That was question number 3 from the worksheet. No, sorry, 4 from the worksheet. Let's see, particular space here. Let's do question number 5 now. We have this polynomial ax cubed minus 10x squared plus bx plus 8, where a and b are constants. It's denoted by p of x. It's given that x minus 2 is a factor of both p of x and b dash of x. Find the values of a and b. All right, so we have this polynomial, and we are given that x minus 2 is a factor of p of x and also p dash of x. अच्छा, एक चीज से देखें, जो फैक्टर दिया हुआ है उसने ये लीनियर फैक्टर है, तो इसका मतलब है आप रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम को आप यूज कर सकते हैं, राइट। एक्स जब लीनियर होता है डिवाइजर, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे इट्स अ लीनियर फैक्टर, सो यू कैन यूज दैट। तो एक चीज तो आप ये कर लें, p of x is equal to ax cubed minus 10x squared plus bx plus 8. x minus 2 अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या होएगा, अगर आप x minus 2 को 0 से इक्वेट करें, what value of x do you get from that? x equals 2. ये जब वैल्यू उसके अंदर इनपुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप p of 2 फिगर आउट करेंगे, x की जगह पे 2 डाल दें, तो आपके पास क्या आएगा, a into 2 क्यूब minus 10 into 2 squared plus b into 2 plus 8. This is the equation that we get. अब क्योंकि ये फैक्टर है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, आप लेफ्ट साइड पे 0 इनपुट कर दें, इक्वेट कर दें इसको 0 से। What do you get on the right side now? 8a minus 10 into 4, which is 40, plus 2b plus 8, and we end up getting an equation like this, 8a plus 2b minus 32. 32 goes to the other side and becomes 32 like this. We can simplify this, and we have 4a plus b equals 16. This is one equation that we're getting. Okay. अब दो अननोन्स हैं, एक इक्वेशन है, इससे हम a और b की वैल्यूज तो नहीं फिगर आउट कर सकते। We have another piece of information given, and that is that the derivative of p of x, उसका भी पोलिनोमियल है x, उसका भी फैक्टर है x minus 2। तो आप क्या करेंगे, p dash of x फिगर आउट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, और उसमें भी आप x की वैल्यू 2 इनपुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेट्स फाइंड p dash of x। डेरिवेटिव इसका क्या होएगा, 3 मल्टीप्लाई होएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 3x ax स्क्वायर minus 10x square, 10 into 2 is 20 into x plus b, that's p dash of x। इसके अंदर भी आप वही करें, x की वैल्यू 2 इनपुट कर दें और रिमाइंडर को 0 इनपुट कर दें। इसमें 2 इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट साइड पर 0 रख लें, राइट पे आपके पास आ जाएगा 3a into 2 squared minus 20 into 2 plus b, and that gives us 12a minus 40 plus b equals 0, and we get another equation which is 12a plus b equals 40। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपने a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, आप कोई भी मेथड यूज कर लें,
elimination, substitution, whatever you want. If I were to make B the subject here, that would give me 16 minus 4A. And if I make B the subject here, that would give me 40 minus 12A. दोनों को equate कर दें. We get 16 minus 4 times A equals 40 minus 12 times A. 12A left side पे आके 8A हो जाएगा. 12A minus 4, that becomes 8A. 40 minus 16 is going to give us 24, and the value of A turns out to be 3 from this. ठीक है, वापस इनपुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर. लेट्स से मैं इसमें इनपुट कर देता हूँ. B की वैल्यू आ जाती है 16 minus 4 into 3, and B turns out to be equal to 4. A equals 3 and B equals 4. These are the values of A and B that we're getting. Okay. Spirited. I'm not sure what the name is. I'll answer your question in a moment. Let me just complete the second part of this. मैं इस पे वापस आता हूँ, ठीक है? अच्छा, A equals 3 and B equals 4. ये आपके पास A और B की वैल्यूज आ गई. Okay. ये आपको करना था इसके फर्स्ट पार्ट में. Let's move on. इसका पार्ट B करते हैं, and then I'll explain what that thing is. आप पूछ रहे हैं. When A and B have these values, factorize B of X completely. Okay. अब उसने कहा है A और B की वैल्यूज आ गई हैं. आपने क्या करना है? P of X को फैक्टराइज करना है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? P of X को पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं. What's that polynomial now? A और B की वैल्यूज आ गई हैं. A की जगह पे 3 डाल दें. It becomes 3x cubed minus 10x squared plus bx, which is B is 4, so it becomes 4x plus 8. Right? This is the polynomial that we have. And we know that x minus 2 is a factor of this. एक factor पता है, बाकी factors figure out करने हैं. इसके लिए हम क्या करते थे? Division करनी है हमें सिर्फ. Long division कर लें, या इस case के अंदर if you have done synthetic division, that is going to be much quicker. But if you haven't, just do long division and see what you get from this. 3x cubed minus 10x squared plus 4x plus 8, इसको divide कर दें x minus 2 के साथ. Now, what do you multiply x by to get 3x cubed? इसको आपको 3x square से multiply करना पड़ेगा. Now, 3x square into this whole thing, that gives us 3x cubed minus 6x squared. We change the signs. It becomes minus plus. This gets cancelled. Minus 10x squared plus 6x squared. That gives us minus 4x squared plus 4x plus 8. x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा. माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 4x into this whole thing. What does that give us? That gives us minus 4x square. Minus 4x into minus 2, that is plus 8x. Again, we change the signs, becomes plus minus. This gets cancelled. 4x minus 8x gives me minus 4x plus 8. x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 4x आएगा minus 4 से. So minus 4x plus 8, change the signs, and everything gets cancelled. You get 0 at the end, which is expected because x minus 2 factor था. Remainder 0 आना चाहिए था. आपके factors क्या हो जाएंगे फिर उस polynomial के? P of x is going to be equal to x minus 2 into 3x squared minus 4x minus 4. ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Factorize P of x completely. जब उसने completely लिखा होता है ना, that is kind of a hint for you कि इसको आप और भी factorize कर सकते हैं. जो quadratic factor आ रहे हैं इसको आप और भी factorize कर सकते हैं. तो आपने देखना है, अगर इसको और factorize कर सकते हैं, इसको और factorize करना है आपने. इस quadratic factor को हम अलग से लिख लेते हैं ताकि बार बार वो पूरा expression नहीं लिखना पड़े. Can we factorize this? 3 into 4 gives us 12. 12 हमारे पास आ सकता है 6 और 2 से, so we can factorize it like this. Minus 6x plus 2x minus 4, and we take 3x common. That gives us x minus 2. In the first bracket, यहाँ से 2 common ले लें, we get x minus 2. So we can break this quadratic factor down to 3x plus 2 into x minus 2. तो ये factorization फिर आपके पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x minus 2 multiplied by 3x plus 2
into x minus 2. ये आपकी complete factorization होगी. This is the result that they're looking for. Okay, उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, and that is okay. If you want, you can also write it as x minus 2 whole squared, because x minus 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, into 3x plus 2. That is your final answer that you get from this. ये आपने factorization करनी थी इस part में. Okay, I hope that makes sense. Now, let me just answer that question very quickly. So there's a question in the chat box that, can we write this thing in question number 4 as 1 plus x? Well, the idea behind this thinking is, आप कह रहे हैं कि आपके पास ये जो whole power 1/2 है, आप कह रहे हैं इसको हम यहाँ पे लगा दें 1/2 के ऊपर और x square के ऊपर भी लगा दें, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 1 plus x. Right? Now, it's clearly wrong for the same reason कि a plus b whole squared जो होता है, वो क्या होता है? वो a square plus b square तो नहीं होता ना? प्लस दरमियान में आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, आप पावर को इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. जब मल्टीप्लिकेशन होती है अंदर, तब आप पावर्स को स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं. जब दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, तो आप पावर को अंदर नहीं लेकर आ सकते, आपको उसको प्रॉपर्ली एक्सपैंड करना पड़ता है. इट डजंट वर्क लाइक दिस कि आप ये बाहर वाली पावर एक दफा इस पर लगा दें, इस पर लगा दें. दैट वुड नॉट बी करेक्ट. अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 6 मल्टीप्लाइड बाय x square and then I have whole cube outside, तो 6 का भी क्यूब हो जाएगा और x square का भी क्यूब हो जाएगा, and that is okay. अगर दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा है, फिर नहीं कर सकते. ठीक है, I hope that makes sense. All right, let's move on. That was question number 5 that we did at the end. Let's move on to question number 6. इसके बाद we are going to have a short break for namaz, and then we'll come back to complete this paper. Question number 6, ये करते हैं. Let me have a short break after this. All right, so it says let I equals this. Use the substitution x equals 3 tan theta and show that this integral can be converted to this form. Substitution करनी है. जब भी substitution होगी, वो हमेशा आपको बताएंगे क्वेश्चन के अंदर कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है. ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है. Now, what is the substitution that you're given? It says x equals 3 tan theta. All right, आप क्या करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट कर लेते हो. dx over d theta, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो ये dx over d theta होएगा. ये क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इट रिमेन्स एज इट इज. tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square, so it becomes 3 secant square theta. तो आपको जब सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, एक तो आपको x को रिप्लेस करना है यहाँ पे, वो तो हो जाएगा. दूसरा आपको dx को भी तो d थीटा करना होता है, तो उसके लिए हम ये डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर हम dx को यहाँ पे अगर सब्जेक्ट बना लें, तो उससे हमें क्या मिलेगा? dx equals 3 secant square theta d theta. तो dx की जगह पे हम ये चीज इनपुट कर देंगे. Let's do these two things and see what we can do after that. So I equals integral of 27 over 9 plus x squared whole raised to power 2 with respect to x. ये आपके पास इंटीग्रेशन है. Limits are from 0 to 3. आपने बस सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अभी लिमिट्स आपने नहीं छेड़नी. लिमिट्स को आप मतलब लिमिट्स आप रखे नहीं, लिखे नहीं यहाँ पे, उसको एज इट इज सिर्फ इंटीग्रल साइन यूज करें. लिमिट्स को भी इग्नोर कर दें. अब लिमिट्स को भी आपको चेंज करना आएगा, बिकॉज जब x थीटा में कन्वर्ट होगा तो लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएंगी. यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, इसकी वर्किंग आपको दिखानी होगी, हम बाद में देखते हैं. Let's do the substitution first. Numerator में we have 27, in the denominator we have 9 plus x square. x की जगह पे आपको क्या इनपुट करना है? 3 tan theta. So it becomes 9 plus 3 tan theta whole squared. और फिर इस पूरे का स्क्वायर. Okay, that is what we have here. dx को रिप्लेस कर दें 3 secant square d theta से. ये आपने जब कर लिया, इसके बाद आप देखते हैं कि
कोई वेरिएबल रह तो नहीं गया, कहीं पे x रह तो नहीं गया, वहाँ पे x नहीं है आपके पास, आपने सब कुछ कन्वर्ट कर लिया थीटा में, सो द सब्स्टिट्यूशन इज डन। अब आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, आपके पास यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास इधर क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर आ रहा है और tan आ रहा है। अब इसको tan स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, डिनोमिनेटर में वी हैव 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, राइट, 3 का स्क्वायर 9, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर, and we have 3 into secant square theta in the numerator. इसको हम multiply कर लेते हैं, 27 times 3 is going to give us 81, and then secant square theta, we have d theta here, इसकी इंटीग्रेशन है। अब इसको किसी तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, let's see how we can do this। secant square और हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आ रहा है। Now one idea is that we expand the square, but that's going to make things a bit more complicated। हम अभी before expanding क्या करते हैं, इसको ना सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर है ना। अब आपको आइडेंटिटीज अगर याद होंगी तो आपके जहन में फौरन आएगा कि सीकेंड स्क्वायर और टैन स्क्वायर के दरम्यान में ना कोई कनेक्शन होता है, सीकेंड स्क्वायर और टैन स्क्वायर के दरम्यान में कोई कनेक्शन होता है। व्हाट्स दैट कनेक्शन, यू हैव दिस आइडेंटिटी, यू कैन सी द फॉर्मूला शीट, you have this identity 1 plus tan square theta is identical to secant square theta, right? तो आप डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर में ये कर सकते हो कि tan square theta की जगह पे लिख दो secant square theta minus 1, और उससे फायदा क्या होगा, मोस्ट लाइकली कि आपका कुछ कैंसलेशन शायद हो जाए। लेट मी सी, 9 और ये आएगा और -1, या सो देखें ये 9 और ये इस -1 की वजह से आपका -9 आ जाएगा और ये कैंसिलेशन हो जाएगी, आपको एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ेगी। लेट मी इनपुट दैट एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस। 81 into secant square theta in the denominator, we have 9 plus 9 into tan square theta, tan square theta की जगह पे हम ये इनपुट कर सकते हैं secant square theta minus 1, and then this whole squared. Okay, now in the numerator we have 81 secant square theta. In the denominator we get 9 plus 9 secant square theta minus 9 इस पूरे का whole square, अंदर वाला पार्ट हमने expand कर लिया, and outside we have d theta here। अब डिनोमिनेटर में देखें 9 और 9 कैंसिल हो गए, and you have 9 secant square theta और उस पूरे का square, so this is going to become 81 secant square theta divided by 9 का square is 81 secant square theta का whole square, that is going to be secant raised to power 4 theta। 81 and 81 get cancelled, secant square theta gets cancelled with 2 power of secant raised to power 4, and you're left with 1 over secant square theta। अब आप देखिए आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ करना था cos square theta अंदर आना चाहिए। 1 over secant square can be written as cos square because cos का जो reciprocal होता है that is secant। Okay, this is what we needed inside the integral there। ठीक है, एक आपको ये चीज करनी थी, सब्स्टिट्यूशन करके ये प्रूव करना था कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं। The second thing that you have to do is you also have to change the limits। एक मार्क उसका भी होएगा, आपको लिमिट चेंज करनी है। Let's do that now। आप देखिए अपर लिमिट आपके पास क्या है, 3, x जो है वो 3 है, x equals 3 tan theta, तो इससे आपके पास क्या आएगा, अलग अलग इस तरह कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उधर साइड पे चला जाएगा। upper limit is x equal upper limit is x equals 3। आपके पास यहाँ पे क्या है, x equals 3 tan theta, इसका मतलब क्या है 3 equals 3 tan theta।
and that gives us 1 equals tan theta. Tan inverse of 1 is going to give us pi over 4. ये आपकी अपर लिमिट आ गई. ये आपको शो करना पड़ेगा प्रोसेस, क्योंकि उसने प्रूव करने के लिए कहा है ना, तो आपको लिमिट्स भी शो करनी है कि वो कैसे पाई ओवर 4 और 0 आ रही है. अच्छा, दूसरी वैल्यू ऑफ x क्या है? x इक्वल 0. 0 equals 3 tan theta. That is going to give us 0 equals tan theta. और फिर tan inverse of 0, that is going to give us theta equal to 0. ऑलराइट, ये आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी. फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड पे लिमिट्स डाल दें. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4. ये आपने प्रूव कर लिया जो उसने कहा हुआ था. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. लेट्स मूव ऑन. In the second part it says, hence find the exact value of I. अब आपने देखे इंटीग्रल को इसमें कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में. अब आपको उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स इनपुट करनी है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फिगर आउट करनी है. Now let me write down the integral here. The integral looks like this. I equals integral of cos square theta d theta with limits 0 to pi over 4. ठीक है. Now how do you integrate cos square theta? Remember that ये आपको पता होना चाहिए. Even powers of sin, cos, tan कैसे इंटीग्रेट करते हैं. Remember इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है. हमने यहाँ पे किया हुआ है integration powers of trigonometric functions. We have done this. Sin square को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, cos square को कैसे इंटीग्रेट करते हैं. आपको बस वो पूरा प्रोसेस as it is अप्लाई कर देना है और आप देख लेंगे आपके पास क्या आता है. Where did that go? Yeah. तो cos square के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होती है? cos 2x और let's write cos 2a, that is identical to cos square. कौन सी वाली फॉर्म में आ रहा होता है इसकी? 2 cos square a minus 1. इसमें इस ये आइडेंटिटी आपके पास दी होती है फॉर्मूला शीट में. हम क्या करते हैं, इसमें cos square a को सब्जेक्ट बना लेते हैं and that gives us 1 plus cos 2a. जब 1 उधर जाएगा 1 plus cos 2a हो जाएगा. फिर ये 2 जाके डिवाइड हो गया वहां पे and we get 1 over 2 plus cos 2a over 2. I write them separately like this because it's going to help integrate more easily, or you can write them together as well. That's okay. कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे इकट्ठा भी लिख सकते हैं. This is cos square a. तो आप क्या करोगे, cos square theta को उससे रिप्लेस कर दोगे. cos square theta की जगह पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1 plus cos 2 theta divided by 2 with respect to theta. Remember, we can't integrate this directly. So there's a careless error that a lot of people end up doing in this. And that is कि उनको लगता है कि अच्छा इसको हम cos theta whole square लग लें और ये power form है, इस पर power rule लगा दें. Remember, power rule does not work here. Power rule लगाने के लिए जो अंदर वाला expression होता है, that has to be linear. वो कोई linear expression हो सकती है. अगर linear expression के अलावा कोई और चीज़ है तो आप उस पर पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते. सो वो यहाँ पे नहीं लगेगा. ठीक है, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज करके आपने स्क्वायर को खत्म करके डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया. यू कैन राइट 1 over 2 आउटसाइड हियर. दैट्स गोइंग टू मेक थिंग्स सिंपलर. इनसाइड यू जस्ट लेफ्ट विद 1 plus cos 2 theta. ठीक है, अब 1 over 2 बाहर है. 1 का इंटीग्रल, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? रिमेंबर, आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे वो थीटा है. तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा is going to be theta. जिस तरह 1 का इंटीग्रल with respect to x होता है, 1 का इंटीग्रेशन with respect to theta होगी. Okay, so it becomes theta plus cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? Sin. So we get sin 2 theta, but then we also have to divide by the derivative of 2 theta, which is 2. ओके, ये आपने इंटीग्रेशन कर ली. आपको लिमिट्स इनपुट करनी है 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक. लेट्स इनपुट दोस लिमिट्स एंड सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस. 1 over 2 हमारे पास बाहर है, अंदर हमारे पास एक दफा पाई ओवर 4 इनपुट करना है हमें. वी गेट पाई ओवर 4 प्लस साइन ऑफ 2 पाई ओवर 4 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक दफा 0 इनपुट कर दें. वी गेट 0 प्लस साइन ऑफ 2 into 0, दैट्स जस्ट गोइंग टू बी 0 ओवर 2. ठीक है, 1 over 2 into
pi over 4 plus sine of 2 pi over 4. That means pi over 2. Sine pi over 2 क्या होता है? 1 होता है. So it becomes pi over 4 plus 1 over 2. Minus 0 plus sine 0 over 2. ये दोनों 0 होते हैं. So we just have 0 there. 1 over 2 अंदर multiply करते हैं. You get pi over 2 plus 1 over 4. That is the result that I'm getting from this. Okay, pi over 2 plus 1 over 4. No, sorry, pi over 8. 1 over 2 into pi over 4. I'm just taking my working. You 2 or 4 multiply होंगे, ये 8 आ रहा होगा यहाँ पे. Pi over 8 plus 1 over 4. All right, so that's the answer that we get from this. ये आपको integrate करना था, इसकी exact value figure out करनी थी. इसको decimals में नहीं लिखेंगे, exact form में ही लिखेंगे. All right. Now we will be doing this next. Complex numbers. I'm going to see कितने इसके total questions हैं. Let's start with this now. Before we start, actually, just a reminder, make sure that you like the stream and also subscribe to the channel and share with others if you think it might help any of your friends as well. Let's begin. So our time is going to be around about this same time, around 4:15 p.m. Every day from now on, maybe apart from Sunday. Yeah, so definitely not Sunday, but the other 6 days I'll try to do it daily at 4:15 p.m. inshallah. So I'm starting with paper 3 today, but then we'll do all the 4 papers that I teach, P1, P3, M1, and S1. Okay, let's start then. Question number 7 from the worksheet, from this paper. Okay, the complex number u is defined by u equals this, where a is a positive integer. Express u in terms of a in the form x plus iota y, where x and y are real and exact. Okay, so we have one complex number divided by another complex number. How do we divide complex numbers? Remember, we multiply and divide by the conjugate of the denominator. That is what we are going to do here. We have u equal to square root of 2 minus a into square root of 2 iota divided by 1 plus 2 iota. Since we want x plus iota y form, that means we do not want an iota in the denominator. Denominator से iota हमें eliminate करना है. इसके लिए हम ये करते हैं कि multiply और divide कर देते हैं denominator के conjugate से. 1 plus 2 iota का conjugate क्या होगा? 1 minus 2 iota. You multiply and divide by that like this. Okay. अब इसकी working आपको सारी show करनी होती है. ये calculator से आप कर सकते हो check, लेकिन वो सिर्फ verification के लिए हो सकता है. You have to show working. Examiner also knows that you can do this on your calculator. So you are not allowed to just write down the answer directly. Okay, Pakiza, I will be posting that on the YouTube page every day as well. And so those of you who are studying for me at some place, either you've done a crash course with me or you study with me at a school, I'll be posting that on your WhatsApp groups as well. Okay. All right. Now let's start with this. Multiply कर दिया और divide कर दिया conjugate से. Numerator को simplify कर लें. Square root of 2 into 1, that gives you square root of 2. Square root of 2 into minus 2 iota, that gives you minus 2 into square root of 2 iota. You can also find that update on my Instagram page. I'll try that I keep updating that regularly as well, so that you know which paper we're doing. So Instagram पे मैं post कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैं post करता हूँ regularly. Okay, square root of 2 minus 2 square root of 2 iota minus a square root of 2 iota plus this term into this term. ये plus हो जाएगा, right? Minus minus is going to become plus. And you have square root of 2 into 2. That is going to be 2 square root of 2. And we also have an a from here and iota squared. Okay, ये आपने multiplication कर ली numerator में. In the denominator, you have a plus b and a minus b. That is going to become a squared minus b squared. So इसको आप लिख सकते हैं 1 squared minus 2 iota whole squared. That is what it becomes. ठीक है, अब numerator को simplify कर लेते हैं. Square root of 2 minus 2 square root of 2 iota minus
a square root of 2 iota. Iota squared -1 होता है, तो ये -1 इधर साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स -2 square root of 2 into a divided by 1 minus 4 iota squared. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपको क्योंकि x प्लस वाई आयोटा वाली फॉर्म में चाहिए, रियल पार्ट को अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। रियल पार्ट न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स a, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट से जो आई वाली टर्म्स है, इनको आप अलग साइड से, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप इकट्ठा आयोटा को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या बचेगा, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा whole divided by 1 minus 4 iota square, that is going to become 1 minus 4 into -1, वो 5 हो जाएगा। तो आप अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली कैसे लिखेंगे, यू कैन से दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus 2 square root of 2 a divided by 5, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस -2 square root of 2 -2 square root of 2 minus a square root of 2 divided by 5, and you have iota with this. And that's your final result. You can leave it like this, and that's okay. If you want, you can also take square root of 2 common from the numerator in both those fractions, but that's not necessary. If you leave it like this, that is also acceptable. This is u in the form x plus iota y. ये आपको यहाँ पे करना था, ठीक है? Let's move on to the second part. It's now given that a equals 3, express u in the form r e raised to power iota theta, where r is greater than 0 and theta is between -pi to pi. Okay, Mr. It really depends on how well prepared you are. It depends on that. So if you think you're well prepared, you've done enough practice टॉपिकल वाइज, तो फिर आप ईयरली पे मूव करना बेहतर है, बिकॉज उससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल रही होती है, आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर के एक पेपर में पूरे क्वेश्चन आपने टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करने हैं। पेपर 3 में स्पेशली टाइम का मसला होता है कभी कभी, तो आपको ईयरली जरूर करने चाहिए, इट्स नॉट द सेम थिंग। बट अगर आप किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको पहले उनके टॉपिकल्स करने चाहिए, या इनफैक्ट आप जनरली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल, तो फिर आपको पहले टॉपिकल्स पे फोकस करना चाहिए अभी के लिए, एंड जस्ट स्पेंड, अगर आप ज्यादा स्ट्रगल करें तो फिर बिल्कुल एंड पे जाके ईयरलीज करें। एंड इफ यू आर समवेयर इन द मिडिल एवरेज, तो फिर आप इतना से आइटरेटिव प्रोसेस लेकर चलते हो दैट यू डू अ फ्यू पेपर्स, 2-3 पेपर्स करें, फिर आप देखेंगे अच्छा कौन से टॉपिक्स में आप ज्यादा मार्क्स लूज कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के आप जाके टॉपिकल क्वेश्चंस ज्यादा करें डिटेल में दोबारा से, उससे आपकी तैयारी बेहतर होगी उस टॉपिक की। फिर दोबारा से ईयरलीज पे आए, 2-3 और पेपर्स करें, देखें आप इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आपके मार्क्स ज्यादा लूज हो रहे हैं, उनके टॉपिकल्स करें। सो इट्स लाइक एन आइटरेटिव प्रोसेस दैट यू कैन वर्क विद फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स और सो। फिर आप एंड पे जाके ज्यादा ईयरली पेपर्स पे भी फोकस कर सकते हैं। सो इट रियली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी अपनी भी इस पॉइंट के ऊपर क्या स्टैंडिंग है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। पार्ट बी, ये आपके पास आ गया u इक्वल टू दिस, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन हियर। उसने कहा a की वैल्यू अब 3 है। अच्छा, a की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं टू सिंप्लीफाई थिंग्स। यहाँ पे a की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus a square root of 2 divided by 5, you have iota here. a की जगह पे यहाँ पे हम 3 input कर देते हैं, so this is what we have here. ठीक है, अच्छा ये आपके पास आ गया। उसने कहा express u in this form, and you also have to give the exact values of r and theta. You need to express u in the form r e raised to power iota theta, where r is greater than 0 and theta is between -pi and pi, और इनकी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज लिखनी है। मॉडुलस ऑफ u फिर उससे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम कॉमन लेकर लिख लेते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर लिखें। रिमेंबर आपके पास मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस से आ रहा होता है। आपने दोनों को स्क्वायर करना है, यू कैन राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेके आपके पास अंदर क्या बचेगा, 1 minus 6 which is going to be -5. Yeah, so I think that's going to become much simpler actually. तो वैल्यू इनपुट करके ना काफी सिंपल हो जाता है। यू इनपुट करते हैं इसके अंदर पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus 6 square root of 2 divided by 5 plus minus 2 square root of 2 minus 3 square root of 2. Yeah, so I did not really think about that. ये बनता है minus 5 square root of 2 divided by 5 iota. Okay, my bad. This is much simpler. This just becomes minus 5 square root of 2 over 5 minus just square root of 2 into iota, which gives you minus square root of 2 minus square root of 2 iota, and that's extremely simple. Okay, ये आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। अब इसमें आपको क्या करना है, r निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, and that is going to give you square root of 2 plus 2, which is square root of 4, and that gives you 2. r की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई आपके पास। अब इसका आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते थे, बेसिक एंगल पहले फिगर आउट कर लें। tan alpha equals square root of 2 over square root of 2, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेकर बेसिक एंगल निकालें। दिस बिकम्स tan alpha equals 1। इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई ओवर 4 होता है। अब देख लें कौन से क्वाड्रेंट में हम, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये नीचे आ रहा होगा यहाँ पे। ये बेसिक एंगल हमारे पास आया है, तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, रिमेंबर आर्गुमेंट के लिए ये इंटरवल होता है हमारे पास -π से लेकर पाई तक, तो आपको नेगेटिव साइड पे जाना पड़ेगा। फिर दिस इज द एंगल दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई में से पाई ओवर 4 माइनस कर दें, और क्योंकि ये नेगेटिव है इसको बाहर नेगेटिव लगा दें, जो थीटा है आपके पास वो आ जाता है इससे minus pi minus pi over 4, which is going to become 3 pi over 4. That's the argument for you. So उस फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u is going to be equal to r, which is 2 into e raised to power iota theta. So that's minus 3 pi over 4 iota. Okay, that is what this form actually becomes. All right, so that's the result that we get from this. तो इसमें डायरेक्टली करना ही आसान है, इसको अगर डिवीजन वाले से करते हैं उससे एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आती है हमसे, ठीक है। डायरेक्ट करके हमारे पास सो डायरेक्ट करके हमारे पास जल्दी हो जाता है, और उस दूसरे वाले से एग्जैक्ट फॉर्म आ भी नहीं देती है हमारे पास, तो वो हम यूज करते भी तो हमें उसका सिर्फ एक ही मार्क मिलता है, 2 मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू थीटा की नहीं आ रही थी, करेक्ट थी लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं थी। ओके, ऑल राइट, that is part B of this. In part C, it says, using your answer to part B, find the 2 square roots of u, give your answer in the form r e raised to power iota theta, where r is greater than 0 and theta is between -π and π, given exact values of r and theta. Square roots निकालने हैं, e power iota theta वाली फॉर्म से आप square roots कैसे निकालते थे, आपको सिंपली क्या करना है, u equals 2 e raised to power minus 3 pi over 4 iota, right? This is what the original number is. इसके स्क्वायर रूट्स के लिए एक स्क्वायर रूट तो आपके पास डायरेक्टली आ जाते हैं, और डायरेक्टली कैसे आता है, आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पूरे ऊपर पावर लगा देते हैं, पावर 1/2 लगा देते हैं बेसिकली। सो नंबर 1, द फर्स्ट स्क्वायर रूट, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट स्क्वायर रूट u1। ये कैसे आएगा, पूरे के ऊपर पावर लगा दें, 2 e raised to power minus 3 pi over 4 iota whole raised to power 1/2, ठीक है, पूरे के ऊपर पावर 1/2 लगा दी। अब इससे क्या हो जाएगा, 2 raised to power 1/2, that's like square root of 2 into e raised to power minus 3 pi over 8 iota,
ये आपका एक स्क्वायर रूट तो इससे आ गया, सो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई रेज टू पावर -3 पाई/8 आयोटा। ठीक है, एक स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, आपको दूसरा निकालना है। दूसरे का देखें, जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेल, आपके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सो वन स्क्वायर रूट इज लेट्स से एक्स प्लस वाई आयोटा, दूसरा क्या होता है माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। तो अगर एक स्क्वायर रूट यहाँ पर है, दूसरा किधर होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे। तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, और उनका एंगल जो होता है ना, उसमें एंगल में कितना डिफरेंस होता है, पाई का डिफरेंस होता है। तो आपको सिंपली करना क्या होता है, अगर तो ये पहले वाले का आर्गुमेंट नेगेटिव है, पहले स्क्वायर रूट का आर्गुमेंट नेगेटिव है, आपने इस आर्गुमेंट में पाई ऐड कर देना है, वो दूसरा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा इंटरवल के अंदर। और अगर पहला आर्गुमेंट पॉजिटिव होता तो आप उस आर्गुमेंट में से पाई माइनस कर देते, तो दूसरा आपके पास दूसरा स्क्वायर रूट आ जाता। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडुलस तो वही रहता है दूसरे स्क्वायर रूट का, दैट इज गोइंग टू रिमेन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस आर्गुमेंट में क्योंकि ये अभी नेगेटिव आर्गुमेंट है, इसका मतलब है कहीं नीचे होगा, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे, -3 पाई/8 या एक्चुअली फोर्थ में होएगा, ये आपका इस इधर आ रहा होगा। तो दूसरा किधर आना होना चाहिए फिर इसके ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे। वो कैसे आएगा, आप इसमें पाई ऐड कर देंगे, लेट्स डू दैट ऑन द साइड, -3 पाई/8, इसमें बस आप पाई ऐड कर दें, दैट इज गोइंग टू गिव अस 5 पाई/8। that is the argument of the other square root. So the other square root therefore is square root of 2 into e raised to power 5 pi/8 iota. ये आपके पास सेकेंड स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, these were the two square roots that we were looking for. ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, पहला वाला सिर्फ पावर 1/2 करने से आ जाएगा, दूसरे के लिए बस आपने या तो पाई ऐड करना है या पाई माइनस करना है। That's all that you have to do. Okay, let's move on. Question number 8. Now this is differentiation, implicit differentiation. The equation of a curve is x cube plus y cube plus 2xy plus 8 equals 0. Find dy over dx in terms of x and y. अब यहाँ पे देखें y सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको implicit differentiation यूज करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, let's write that function down here. First of all, x cube plus y cube plus 2xy plus 8 equals 0. Let's differentiate this whole equation with respect to x and see what that gives us. x cube का डेरिवेटिव is 3x squared plus y cube का डेरिवेटिव 3y squared, but then you also have to multiply by the derivative of y. The derivative of y is dy over dx. Remember, हम यहाँ पे भी जो बेस x थी उसके डेरिवेटिव से एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होएगा, वो dy over dx होगा। तो we have to put dy over dx. In general, you can just remember, जहां पे भी y आ गया ना, उसके साथ dy over dx आपके पास आना ही होता है। Then you have 2xy. 2 तो वैसे ही रहा, xy is a product, you'll have to use product rule on this. You can say x is u, this is v. Product rule क्या होता है, uv dash plus vu dash. 2 as it is रहेगा, multiplied by u, which is x, into derivative of v, y का derivative, that's dy over dx, plus v as it is, that means y as it is, into derivative of u का derivative यानी x का derivative वो क्या होएगा, just 1 with respect to x. 8 का derivative is 0, on the other side we have 0, 0 का derivative भी आपके पास 0 आएगा। ठीक है, ये आपने differentiate कर लिया। All you have to do now is make dy over dx the subject. So it becomes 3x squared plus 3y squared into dy over dx plus 2x into dy over dx plus y, in fact plus 2y equals 0. dy over dx वाली टर्म्स एक साइड पर रख लें, इनमें से आप dy over dx कॉमन ले लें, so you have 3y square plus 2x whole multiplied by dy over dx. बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, we get 2y minus 3x squared on the other side. So dy over dx therefore becomes 2y minus 3x squared divided by 3y squared plus 2x. Okay, that's what we get for dy over dx. Let me just check this working. यहाँ पे हमने कुछ गलत नहीं किया।
2y इधर था, 2y को राइट पे ले गया, so 2y के साथ यहाँ पे माइनस होना था, जब 2y को राइट साइड पे ले गए आपके पास माइनस भी आता है यहाँ पे, so we have minus 2y minus 3x squared divided by 3y squared plus 2x. That's your final result that you should be getting from this. Okay, ये आपका first part हो गया. Now we are running out of time. We only have about 15 minutes to go. Okay, let's speak quick and see if we can complete this. ये आपका first part हो गया, ठीक है? Let's look at part B now. The tangent of the curve at the point where x equals 0 and the tangent at the point where y equals 0, they intersect at the acute angle alpha. Find the exact value of tan alpha. All right. So the tangent of the curve at the point where x equals 0 and the tangent of the curve at the point where y equals 0, they intersect at acute angle alpha. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो tangents हैं. So one tangent is like this, another tangent is like this. इनके दरम्यान में जो angle है उसने कहा है वो alpha है. Right? Now we need to find the value of tan of alpha. दो lines के दरम्यान में angle निकालना है. इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ये हमने पेपर 1 में किया हुआ. देखिए पेपर 1 वाली कोई भी चीज आपके पास पेपर 3 में भी आ सकती है. देखिए आप एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो आपको यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा. रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट, एंगल बिटवीन टू लाइंस. डायरेक्टली आप ये इस तरह से कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. ये आपके पास फॉर्मूला होता था फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस. तो दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स के दरम्यान में एंगल उसने बताया हुआ है, उसके टैन निकालना है. तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन से होते हैं, स्ट्रेट लाइंस में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है. इसके लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए. दोनों टेंजेंट्स का ग्रेडियंट चाहिए. तो आपको करना क्या है, इन दोनों टेंजेंट्स का ग्रेडियंट निकालना है. टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? जो कर्व का ग्रेडियंट है उस पॉइंट के ऊपर. So you need to find the gradient of the curve when x equals 0 and also the gradient of the curve when y equals 0. इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने कर्व का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है? और फिर आपने देखना है इस फॉर्मूला का यूज करके आपके पास क्या वैल्यू आती है. अब ये पॉइंट्स हैं आपके पास दो और dy by dx. Let me write down the equation of the curve here and also dy by dx. Equation of the curve is x cube plus y cube plus 2xy plus 8 equals 0. This is the equation of the curve. And dy by dx, that turned out to be dy by dx हमारे पास आ रहा था minus 2y minus 3x square divided by 3y squared plus 2x. अच्छा, अब देखिए एक पॉइंट है x इक्वल 0, x इक्वल 0 पे ग्रेडियंट चाहिए. अब मसला ये है, ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों x और y के टर्म्स में आ रहे हैं. इसमें x की वैल्यू भी चाहिए आपको और y की वैल्यू भी चाहिए. दोनों पॉइंट्स पे आपको दोनों वैल्यूज चाहिए, x की भी वैल्यू चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो पॉइंट्स फिगर आउट करने पड़ेंगे. आप ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आप क्या करें, एक दफा x इक्वल 0 इनपुट करें और देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या आती है. x इक्वल 0 डाल देते हैं, वी गेट 0 प्लस y क्यूब plus 2 into 0 plus 8 equals 0. We get y cube equals minus 8 and y equals minus 2. तो एक पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 0 minus 2. ठीक है. अब इसी तरह उस इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, एक दफा आप इनपुट कर देंगे x equal to y equal to 0. दूसरा पॉइंट क्या था, y equal to 0. दूसरा पॉइंट इनपुट कर दें ये वाला, उसमें आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 इनपुट करनी है. लेट्स डू दैट. जब y 0 इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x क्यूब प्लस 0 plus 0 plus 8 equals 0, and we get the same thing from here as well. X cube equals minus 8 and x equals minus 2. तो जो दूसरा पॉइंट आया आपके पास, that is minus 2 and 0. So दो टेंजेंट्स की बात हो रही है, उनके ग्रेडियंट्स क्या हैं, वो इन पॉइंट्स को इनपुट करके आपके पास आएंगे.
dy by dx इन दिस केस आप इसके अंदर इनपुट कर दें -2 × x की जगह पे 0 इनपुट करें, y की जगह पे -2 इनपुट कर दें, यू गेट -2 × -2 -0 divided by 3 into -2 squared plus 0, and this gives us 4 over 12 which is 1 over 3. ये आपके पास एक टेंजेंट का ग्रेडियंट है, ये आपका m1 हो गया एक तरह से। इसी तरह से दूसरी वैल्यू आप dy by dx के अंदर इनपुट करें, देखें इससे आपको क्या मिलता है, -2 into y which is 0, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे हम डेरिवेटिव के अंदर इनपुट करें ये वाला दूसरा वाला पॉइंट, 0 -3 into -2 whole squared divided by 0 plus 2 into -2. What do we get from this now? -3 into 4, that's -12 divided by -4. And this gives us 3. This is the gradient of the other tangent. अब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। इसने कहा था एंगल क्या है, एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan theta equals this m1 minus m2. m1 is 1 over 3 minus m2 which is 3 divided by 1 plus m1 which is 1 over 3 into m2 which is 3. Let's see what we get from this. This is giving us 1 over 3 minus 3. अच्छा, अब देखिए इसमें एक मसला है, उसने कहा है find the exact value of tan alpha such that the angle alpha is acute. Angle alpha is acute. अब देखिए जब acute angle है, इसका मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट? अब ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, अगर मैं इस तरह से इनपुट करता हूँ, m1 माइनस m2 लिखा होता ना फॉर्मूला में, अगर मैं m1 माइनस m2 इस तरह करता हूँ कि मैं इसको m1 ले लेता हूँ, इसको m2 ले लेता हूँ, तो मेरे पास tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, विच वुड बी इनकरेक्ट बिकॉज मुझे tan की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, आप ऑपोजिट ले लेते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा इसको हम m2 कर लेते हैं और दूसरे को m1 कर लेते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला में उल्टा कर लें, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 minus 1 over 3 m1 minus m2 divided by 1 plus 3 into 1 over 3. अब दूसरी तरह लगता है ना, तो वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू देता, ठीक है, आपको एक्यूट चाहिए तो एक्यूट एंगल के लिए tan अल्फा पॉजिटिव होगा, तो आपको वो वाला केस देखना जहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 8 over 3, इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1 plus 1 which is 2 and that is going to give you 8 over 6 which is 4 over 3. So tan alpha equals 4 over 3 in this case, ठीक है। This is what we were looking for here. I hope that makes sense. Now, I think we'll have to call it a day here because we only have about 7-8 minutes until iftar. So we will end it here. What I'm going to do is I'm going to try and complete the rest of the 2 questions some point later tonight, at some point later tonight, and I'll add that as part 2 of this video. ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको रिकॉर्डिंग उसमें देख सकते हैं। इफ आई गेट टाइम होपफुली लेटर एट नाइट आई विल डू द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और इसमें पोस्ट कर दूंगा, एंड बाय टुमारो फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई टू स्टार्ट अ बिट अर्लियर, स्पेशली ऑन द डेज व्हेन वी आर डूइंग पेपर 3 बिकॉज पेपर 3 में ज्यादा टाइम लग जाता है, बाकी पेपर्स तो जल्दी हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। पेपर 3 वाले दिन आई विल ट्राई टू स्टार्ट अर्लियर ताकि हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर सकें, ठीक है। फॉर नाउ आई विल हैव टू एंड दिस हियर। आई एम इन लाहौर में we have iftar a bit early, so I'll have to end here and I'll see you again tomorrow. इसकी recording में बाकी दोनों questions post करके कर दूंगा, ठीक है। Just before we end, just a reminder, you will find
recordings of my crash courses in the description below, और बाकी बहुत सारे papers मैंने yearly papers last year भी solve किए थे, उसकी भी आपको playlist यहाँ पे description में मिल जाएगी. You can have a look at that as well. We have a lot of a number of quick revision videos for almost all the A-level math topics as well. They should also be helpful. We will do another paper tomorrow, inshallah. Make sure that you like the stream before you end, and also subscribe to the channel and share with others if you think you found this helpful, and if you have any friends who might find this helpful as well, share with them. I'll see you again tomorrow. Allah Hafiz. ये मैं complete करके inshallah post कर दूंगा later tonight.